Hello students, welcome to our channel Education Point Coaching Classes. In today's video, we will study about the reproduction in animals. See, as we know that different life processes like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of every individual. मतलब these processes are the necessary essential for the survival of the life, whereas reproduction is essential for the continuity of life on the earth. Reproduction किस लिए essential है? For the continuity of life. What will happen if the organism hadn't reproduced? अगर organism reproduce ना करे बेटा तो क्या होगा? तो if organism hadn't reproduced, then life will not be able to continue on the earth and face the extinction. मीन्स कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लाइफ कॉन्टिन्यूशन जो होगा उसका पॉसिबल नहीं होगा, और एक्सटिंक्शन मीन्स वो धीरे धीरे जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फ्रॉम दी अर्थ. लिविंग बींग्स आर नॉट इमॉर्टल, मतलब वन डे दे all will die. Eventually they die. What will happen? What will make sure that organism will still exist in nature? मतलब सबका every organism have a definite lifespan. मतलब they take birth after some time or after completing their lifespan they die. तो how organism will still exist in nature? कैसे possible रहे कि वो फिर भी उसमें क्या कर सके, नेचर में उनकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहे. तो एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशी के लिए क्या है प्रोसेस, कौन सा है, रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच मेक्स श्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशी ऑन द अर्थ. तो ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. मतलब द प्रोसेस बाय विच the parent gives birth to their young ones, मतलब अपने young ones को, अपने similar individuals को birth देते हैं. वो process, that process is called reproduction. ठीक, this process is not only important in human being, not in only human being, every organism reproduce, or unicellular organisms also reproduce their young ones. So this process, the reproduction, makes sure the continuation of species of the organism without extinction. मतलब उनके extinction को क्या करता है, वो रोकता है. तो a mango tree gives rise to the mango tree. A cat gives birth to a kitten, producing the same species every time. So have you seen the young ones of different animals? So every animal gives rise to their similar kind of organisms. Try to recall the name of young ones of some animals by completing the table. देखिए यहाँ कौन कौन से, human, the baby of human is called, young ones of human is called baby, और cat is called kitten. The baby of cat is called kitten. The young one of dog is called puppy. और butterfly, the young one of butterfly is caterpillar. Hen, chick, cow, the young one of cow is called calf. The young one of frog is called tadpole. Okay, now types of reproduction. How many types of reproduction? There are two modes of reproduction. Two modes: sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction, it is a process where two parents, male and female, participates in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Means that type of reproduction in which two parents are involved, male and female, both are involved for producing their offspring. Whereas asexual reproduction,
It is a process where a single parent is divided by itself and reproduce its offspring. Means यहाँ क्या कर रहा है, only single parent is involved in the process of reproduction. तो sexual reproduction, for example, it takes place in human beings, cat, dogs. Asexual reproduction, the amoeba, paramecium, ये क्या करते हैं, they show the process of asexual reproduction. ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, the process that helps in giving rise to similar individual, means offspring from the existing one, means the process by which a parent give rise to its offspring is called reproduction. Next question, explain the importance of reproduction in living beings. लिविंग बींग्स में इंपॉर्टेंस क्या है? रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ विदाउट एक्सटेंशन. ठीक है बेटा, बिना एक्सटेंशन के. नाउ व्हाट विल हैपन इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैडंट रिप्रोड्यूस? इफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस देन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड सर्वाइव ऑन अर्थ. तो वो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होगा. ऑल ऑर्गेनिज्म विल बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स? देर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, आर इन्वॉल्व in the process of reproduction, or asexual reproduction in which single parent give rise to his young ones. I hope the concept of reproductions in human is now clear to you. We will meet in the next video with new topic. Till then, take care. Bye.